Hello viewers, today I am going to tell you what to do if your Android phone won't connect to Wi-Fi. There are several times the phone won't connect with the Wi-Fi of the router. In that case, ensure that Wi-Fi is turned on and that airplane mode is turned off. If the airplane mode is turned on, then you are disconnected with the other facilities and it won't be able to connect the Wi-Fi in your phone. Reconnect to your network. If it is not working, then reconnect the network. Reset your phone network and OS setting. And then restarting your phone can clear a glitch and help it to reconnect to Wi-Fi. Finally, you can try a factory data reset, but be careful. It can delete your all data. So how we can do it? Just see. 5 चीजें आप कर सकते हैं. वाईफाई को टर्न ऑन करिए, एयरप्लेन मोड को ऑफ करिए, नेटवर्क को फिर से कनेक्ट करिए, रीसेट करिए फ़ोन को और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, रिस्टार्ट करिए फ़ोन को और वाईफाई को, और अगर कुछ भी ना हो तो फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दीजिए, तो आपका फ़ोन फिर से वाईफाई को कनेक्ट कर लेगा. अब इसको कैसे करेंगे? जस्ट सी इन द ट्यूटोरियल. Why won't my Android phone connect to Wi-Fi? How to troubleshoot an Android that won't connect to the internet? There are a number of different steps you can take if your Android phone won't connect to the Wi-Fi. Luckily, if your Android phone won't connect, there are a number of different steps you can take to help to fix it. What to do if your Android phone won't connect to Wi-Fi? Ensure that Wi-Fi is turned on and the airplane mode is off. For that, you see in your phone, this is the Wi-Fi turn on and flight mode should be off. This should not be on. It should be turned off. Then make sure you are not in airplane mode, which cuts off all your phone's external connection. To do this, head to your home screen and swipe down from the top of the screen. This will open your phone control center. जब नीचे की तरफ आप स्वाइप डाउन करिएगा तो आपका कंट्रोल सेंटर खुल जाएगा. Here make sure that the icon that looks like airplane isn't highlighted or say on. If it is, tap it to turn off. अगर आपका एयरप्लेन मोड खुला हुआ है तो उसको ऑफ कर दीजिए. यू शुड ऑल्सो चेक दैट योर फोन वाईफाई सेंसर आर टर्न ऑन. Launch the setting app and tap connection to make sure your Wi-Fi is toggle on. If it isn't, tap the Wi-Fi toggle to turn it on. और अगर वाईफाई नहीं ऑन हो तो उसको ऑन कर लीजिए. रिकनेक्ट टू योर नेटवर्क. अगर इसको करने से भी ठीक नहीं होता है तो आप अपने नेटवर्क को कनेक्ट करिए. हाउ टू कनेक्ट द नेटवर्क? You have to on the Wi-Fi option. It will connect your network. If your phone is still having trouble connecting, make sure that you are trying to connect to the right Wi-Fi network. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो नेटवर्क उसमें कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो आपका हो ही ना, किसी दूसरे का है. तो आप अपने प्रॉपर नेटवर्क को चेक करिए और पीसी पर देखिए कि वाईफाई कौन सा आ रहा है, उसका पासवर्ड क्या है और उसको कनेक्ट करिए. You can use either a Mac or PC to check your Wi-Fi password, which is good way to find the correct information. If your phone has connected but nothing will load, you can try refreshing your connection to the network. In that connection menu, tap the name of the Wi-Fi you are connected to and then tap forget in the menu that appears. अब कुछ भी नहीं हो रहा है तो forget menu कर दीजिए. Once you forgotten the network, try connecting again. अगर भूल जाओगे तो फिर से वो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा. If none of this work, you might need to restart your Wi-Fi router
You can usually do this by simply unplugging it from 10 seconds and then plugging it back. It will take a moment to restart that will begin broadcasting its signal again. अब उसको ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं तो अपना सिग्नल वो देने लगता है। रीसेट योर फोन नेटवर्क एंड ओएस सेटिंग। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो थर्ड क्या करिएगा, यू हैव टू रीसेट योर ओएस सेटिंग इन फोन। रीसेट सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग टू अदर डिफॉल्ट, reset Wi-Fi, Bluetooth and other networking setting to default, reset your phone to its factory default setting. This will erase all data including the files and download apps. So be careful, don't do this factory data reset. If you are sure, then only do auto reset. Optimize your phone by restarting it automatically once a week. Any unsaved data will be lost when your phone restart. So be careful. Uh, During restart, you must save all your data. If all else fail, then issue might be with your phone, not your internet. अगर ये सब करने पे भी कुछ नहीं होता है तो आपका प्रॉब्लम फोन में है, ना करके राउटर में। You have three option for resetting your Android device, जो हमने आपको बताया, इसमें तीन है ना, रीसेट सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, फैक्ट्री डेटा रीसेट। तो सारा रीसेटिंग करने से भी आपका नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा और काम करने लगेगा। रीस्टार्टिंग योर फोन कैन क्लियर ग्लिच एंड हेल्प इट रिकनेक्ट टू वाईफाई। जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री का सेटिंग ले लेता है और आपकी जो प्रॉब्लम होती है वाईफाई की वो खत्म हो जाती है। इफ योर फोन स्टिल वोंट कनेक्ट, देन इट्स टाइम टू डू समथिंग, रीसेटिंग इन द सेटिंग एप्स। गो टू जनरल मैनेजमेंट, देयर टैब रीसेट। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम करता है तो आप सेटिंग ऐप में जाइए, जनरल मैनेजमेंट में जाइए और रीसेट कर दीजिए। First, we will try the reset network setting option, and which clears always your network and Bluetooth setting. Your phone will restart. Try connecting to Wi-Fi again. अब उससे क्या करेंगे, ब्लूटूथ को और उसको रीसेट करेंगे तो वो फिर से कनेक्शन करने लगेगा। If that didn't work, try the reset setting option, which will erase all your custom setting as well as any ringtones you have changed. Your app's picture and other personal data are safe. So, आपने कुछ कस्टम सेटिंग की है और उसमें कुछ गलत सेटिंग कर दिया तो भी नेटवर्क काम नहीं करता, तो रीसेट करने से, बाय डिफॉल्ट सेटिंग लेने से आपका फिर से नेटवर्क काम करने लगेगा। फाइनली यू कैन ट्राई अ फैक्ट्री डेटा रीसेट। This will erase everything on the phone and return it to its default factory condition as if you have never used it before. This will delete all your data, so be careful. ये करने से पहले अपना डेटा का बैकअप बना लीजिए क्योंकि ये सारे डेटा को डिलीट कर लेगा। If nothing else has worked, you should contact your phone मैन्युफैक्चरर। और अगर आप कुछ भी करने से नेटवर्क नहीं ऑन होता है तो आप फिर अपने फ़ोन के मैन्युफैक्चरर या सर्विस सेंटर पे जाकर उसको ठीक करवाएं। दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।